all three of you, how does it feel coming back to Undekhi? You know, because this was one of the first shows which, you know, gained so much popularity, and it was, I mean, it was so loved. So how does it feel now coming back with a new season? सूर्या शुरू करो. आप करोगे स्टार्ट, मैं तो नहीं करने वाला आपसे पहले स्टार्ट. चलो ठीक है. नहीं, it's a great thing to be back. It's a successful thing. मैंने जाहिर है वो चीज चल पड़ी है तो हम लोग सब बहुत खुश हैं. दूसरा सीजन बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और वगैरह वगैरह. मैंने अगर नहीं चलता तो सब एक दूसरे से मुँह छुपा रहे होते, वो बात अलग है. So yeah, against that, it's a good thing. It's fortunate that it worked, and here we are for the next season, and hopefully we'll go on to the third. Right. Right. Okay. So Surya, after ye Kali Kali Aake, you are back, and you know, like, how excited are you that, you know, all of this is happening ek hi saal mein? Matlab, abhi ye Kali Kali Aake aayi, it became a hit, and Undekhi, you know, people are very excited about the show. So what are you feeling right now? Right now I'm just feeling something I know how to express, क्योंकि मैं शूट पे था उस टाइम पे ये काली काली आंखें आया. अभी शूट खत्म किया है तो अनदेखी का रिलीज हो गया. So I think it will take some time. And किस तरह का फील है, obviously I feel blessed कि at least 8 साल से मेहनत कर रहे थे तो अभी काम बाहर आ रहा है. And ये दोनों चीजें हमने पेंडेमिक में शूट की हैं, तो I feel blessed. Okay. Harshi, tell me what attracted you the most about playing character, you know, that this power drunk man Papaji. What attracted you towards the character? That he's power drunk, that he's mad, that is abusive, that he's an alcoholic, and that is incorrigible. Everything about him was so attractive. There's nothing to say no about it. Right. At least you can live your wild side in fantasy, if not otherwise. Okay. So like, sorry, please go ahead. Yeah, no, that was a great experience. Nothing not to like. Exactly all these things were that I liked. Right. So, you know, I mean, did it take some preparation for you? या ये सारी चीजें जो आप कर रहे थे, was it like, you know, you were actually getting drunk when you had to get drunk, and what was it like? Okay. Then तो काम ही नहीं हो पाता. Shooting रुक जाती, पहले दिन खत्म हो जाती कहानी. But yes, I was sick and tired and almost died of drinking Appy the whole day. So, but no, fortunately, I had a ready reference for this character. It's just I don't know, the coincidence or whatever you call it in life. Because the first time I was given a one-line brief of the character, I straight away went about 40 years back when I have seen this myself. Mm-hmm. So, I mean, not that is an experience which I carry with me all the time. You don't even think about it. Yeah. But it's strangely अचानक 40 साल बाद मुझे exactly वो चीज दिखी जब मुझे ये brief मिला. Mm-hmm. So I have seen this kind of an atmosphere firsthand, but from far off. Fortunately, I was not in the midst of that. Mm-hmm. But I've seen these kind of people day in and day out as somewhere in my neighborhood where I was staying. So I had a good 6 months first-hand show in front of me happening 40 years ago, and I picked up things from there. Okay, Varun. So you play this loyal bodyguard, Lucky, and you know, he has no qualms in getting his hands dirty. वो मतलब कुछ भी extent तक जाएगा to, you know, stay true to these people. So what kind of preparation did you require for your character? Preparation. There were a lot of workshops which happened, and so usme we found a lot. But what fascinated me about Lucky was that he is loyal. The loyalty side of it. So like there is no conscious level, like he'll go to any extent to protect his family, to protect Rinku, which is his brother, and who has done so much for him, you know, in his past, and who has made him who he is today. And he doesn't want to leave this opportunity, you know, of protecting his brother. So that makes him do evil or bad things, but in his mind he is doing the right thing. He is just protecting his family, you know. So there were a lot of workshops, and I was very fortunate enough to be working with Surya, and like he's also very giving
like you know, you push each other's game, and he used to really like push me hard, and yeah, and so that and me and Surya instantly got along. Also, we became really good friends, and Wob also helped. Plus, the workshops helped. So for me, I don't see him as like this, you know, villain character. I see him, yeah. I think I answered that. Okay. Okay, Yeah. so you just told me that you guys share a brotherhood, and we never मतलब है एक brotherhood, we understand कि मतलब वो एक bond है, but वो bond क्यों बना, that we are still unsure of. So will we get to see a sort of backstory इन दोनों का? ऐसा कुछ होने वाला है? I don't know backstory, but you will I mean, you will know that there is a connection. I think connection is the wrong word. You will see that. How do I put it? यार मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता अभी. Like, you will see why he does what he does, and yeah, that's all I can say. You have to see it. वाह, But yes. क्या बात थी, Okay. सब समझ आ गया. मुझे हर सर की तरह आंसर देना चाहिए. मैं अरे Like, देख लो, मिल गया नहीं मिला, क्या पता, सब ऊपर. ऐसे ही है. वही करेक्ट. यस, यही सेम कट कॉपी पेस्ट. Okay. Okay, Surya, you became quite the name after Undekhi came out. So tell me, did that help you in terms of, bagging more projects? Like, did more projects come your way after Undekhi? What happened there? Yeah, there are projects coming, and I again feel lucky कि अनदेखी ने मुझे इस तरह की एक चीज दी है जिससे लोगों ने मुझे एक्टर बोलना स्टार्ट कर दिया. एंड आई थिंक जिस मीडियम में हम हैं यहाँ पे, हम खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कि हाय, हम सूर्या, हम एक्टर. वो ऑडियंस आपको एक चीज देती है और वो इज्जत आपको ऑडियंस देती है, तो वो डेफिनेटली मुझे मिली है. प्लस प्रोजेक्ट, एंड आई एम लिटिल आई विल नॉट से कि मैं प्रोजेक्ट्स को चूज करके काम कर रहा हूँ. मेरे पास चॉइस नहीं है. मेरे पास जो अभी काम आएगा मुझे करना है, क्योंकि आई वांट टू सर्वाइव, आई वांट टू शो माई सेल्फ, and I want to perform, and I want to work with other directors, other co-actors, and मैं वही कर रहा हूँ, and I'm doing it. So I'm happy. जो भी अभी चल रहा है मेरी लाइफ में, I'm doing projects, and yes, ये है कि कई बार आप थोड़ा सा ऐसे हताश हो जाते हो कि यार ये प्रोजेक्ट इस तरह से था और किसी और डायरेक्शन में चला गया, but then it's not in your hand. And same thing happened with अनदेखी. वो जब किया था तब किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ आएगा, क्या चीज होगा, किस तरह से चलेंगी. एंड वो आया, स्लीपर हिट हुआ, सभी के कैरेक्टर्स हिट हुए, एंड एक नाम बन गया. और अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि आपको क्या लगता है कि ये हिट होगा, नहीं होगा. सो वन थिंग आई लर्न इन माई लाइफ, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एनीवन. एक्सपेक्टेशंस होने से क्या है कि कहीं ना कहीं आप खुद ही निराश होंगे. सो अनदेखी सीजन 1 पे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा. एंड आई थिंक यहाँ पे वरुण बैठा है, हर्षर बैठे हैं, तो किसी को भी नहीं मालूम था कि किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा. इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो ये एक जरूर था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी कि हमें अच्छा काम करना है. एंड अनदेखी की टीम एक ऐसी टीम है जहाँ पे आई थिंक बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ एंड लॉट ऑफ मेमोरीज आई हैड, जहाँ पे हम लोग बैठ के बात करते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट वर्क, अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, वी चिल, वी पार्टी. एंड एक ईगो नहीं है किसी में. कहीं पे भी आपको कोई एक्शन ऐसे नहीं दिखेगा कि वो आउट ऑफ ईगो आ रहा है. सब लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं. ये जरूर है कि कई बार इंटेंस सीन चल रहे होते हैं, तो तब यू वांट टू स्टे इन द कैरेक्टर, तो आप थोड़ा सा इशारा कर देते. बाकी या गोइंग गुड. एंड I love the fact that people loving Rinku Paji and Undekhi. Yeah. So, do you believe that, because Rinku Paji का ऐसा personality है कि, he's this staunch man who, doesn't, मतलब वो he's this dark character, and, जैसे टाइप की Rinku Paji है, this is like a role defining sort of a thing. So, वो आपको जो भी projects offer हो रहे हैं, is it, similar kind of roles या कुछ अलग भी मिल रहा है आपको? नहीं, अलग भी चल रहा है. अभी I just finished one film with Red Chilli. I'm playing opposite Bhumi Parnekar, and it's a totally different character. And
मैं ज्यादा उस फिल्म के बारे में बता नहीं पाऊंगा, बट आई जस्ट गॉट टू नो कि अभी दोपहर को अनाउंस किया उन्होंने 2 बजे। सो अगेन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि किस तरह से मैं अपने जो एक मैंने जोन क्रिएट कर दी है रिंकू की ग्रे शेड कैरेक्टर्स की, उससे बाहर आ पाऊंगा कि नहीं, मेरे लिए भी चैलेंज था। और मुझे लगता है कि मैंने काम किया है, क्योंकि डायरेक्टर ने बोला अच्छा काम किया, तो मुझे लगती अब कैसा काम आएगा बाहर वो तो ऑडियंस बताएगी। Yeah, congratulations on the project. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay, Varun. So tell me, what about you? Like, did you start getting more projects after Undekhi? Yeah, touch wood. Like, I'm currently like shooting for like 2 projects and really phenomenal stories. And God willingly, like different characters as well. And I'm just, as Surya said, कि अभी हम चूज ही नहीं कर सकते, हम लकी हैं। मतलब मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मुझे काम मिल रहा है और मुझे काम करना है, because I want to be a working actor. I don't want to sit at home. I want to work. I hope to God that I get good stories, you know, because good stories don't just fall on your lap every day. You know what I mean? And but I'm very fortunate that I'm a part of these 2 really good stories. I hope they come out nice. But on paper, it's very interesting, and I'm currently shooting for both of them. So yes, Undekhi has been very kind. But as Surya said, it is one of the best moments of my life on set on Undekhi. It was just that experience is just. I'll do it just for the experience, you know. Right. And Right. I hope it does well, but I will do it just for the experience. Right. Harshji, so you have been a veteran actor. You definitely have a lot of projects to choose from. You can take that decision. But tell me one thing that, मतलब, I'm just assuming, is that the case? Tell me that कि मतलब मैं you अभी know, 6 like महीने से मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं भी I'm also like in the position. So like, Anyway, is it the same case with you that you have to take up roles that come your way? And I'm not saying कि मतलब ऐसे कि मतलब you know because अभी भी ऐसे लोगों के साथ में कुछ लोगों के साथ में हो रहा है that you know they take up substantial roles, but they also take up roles that you know pay them well. So is it that you pick up projects which are you know a good mix of both, or how does your project picking work? मतलब आप कैसे पिक करते हो प्रोजेक्ट्स को? वो इट्स वेरी सिंपल। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आप मुझे करने को क्या दे रहे हैं। अगर वो अच्छा है, सुनते ही मुझे पसंद आता है, तो उसको मैं सबसे पहले हाँ बोल देता हूँ। अगर मुझे नहीं पसंद आता है तो मैं ये देखता हूँ कि अभी पैसों की कितनी जरूरत है, कितनी नहीं। अगर लगता है सच जरूरत है तो आप काम ले लेते हैं, और अगर मुझे लगता है कि सच जरूरत अभी पैसों की नहीं है तो मैं वो काम मना कर देता हूँ। इसलिए मैं नहीं लेता कि और पैसा आ जाएगा। और अगर तो डिपेंड्स, अब छोटा रोल भी अगर आपको पसंद आ गया तो आप कर लेते हैं। कई बार आपको लगता है कि यार 4 महीने से तो कुछ किया नहीं, सबको मना कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, तो अभी ये 2 सीन का भी काम कर लो। कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है। और कभी आपको एक बड़ा रोल मिलता है लेकिन आपको रोल पसंद नहीं है, बट फाइनेंशियली यू फील ओके, यू नो। फाइनेंशियली फील ओके मींस व्हाट? एट बेस्ट यू सी कि हाँ, for next 4 months, next 3 months maybe I don't see any trouble, so forget it, I don't want to do this. So it depends. The various, what the part is, at where are you at a given point of time in life, at that point of time, what are you feeling, you know, how's your day going, a lot of other things. I mean, for me that's how it works. Right. Okay. Surya, so Rinku Paji, you know, is the ideal family man who, you know, takes the so-called business ahead, and you know that required a certain body language in place. And you know, so you tell me about your preparation process. मतलब वो सारी चीजें, how did you grasp and how did it come about on screen? Again, like we did a lot of workshops, and जिस टाइम पे अंदेखी मैंने साइन किया था, उस टाइम पे आई थिंक आई वाज द फर्स्ट एक्टर जिसने ज्वाइन किया था अंदेखी के साथ। ओके। एंड मैं अपना हॉस्टेजेस कंप्लीट करके फिनिश मैंने किया था, एंड देन आई वाज ऑन अंदेखी। एंड मैं उसी टाइम से ही स्क्रिप्ट रीडिंग में घुस गया था। आई यूज्ड टू गो विद स्ट्रॉन्ग, सिद्धार्थ, आशीष, इन लोगों के साथ बैठ के स्क्रिप्ट रीड करना शुरू कर दिया था, जबकि वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस चल रही थी।
ड्राफ्ट चेंज हो रहे थे स्क्रिप्ट के, बट मुझे लगता था कि ये था कि मैंने जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, ये तो मैंने अपने मन को बोल दिया था कि या तो काम कर लेना, अदरवाइज नहीं हो पाएगा तो पैक योर बैग्स एंड गो बैक। नो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग ट्वाइस, क्योंकि इतना डिलीशियस कैरेक्टर आपको मिल रहा है आपके इनिशियल स्टेज पे, एंड उस पर अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, अपना हार्डवर्क नहीं डालोगे, तो वो फिर मजा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर, सब लोग अपना हार्डवर्क कर रहे हैं तो तभी सस्टेन कर पा रहे हैं। तो वर्कशॉप्स हुई काफी सारी। पहले हम लोगों ने कैरेक्टर के बारे में डिफाइन की चीजें कि ये इस तरह की चीजें करेगा, इस तरह की चीजें नहीं करेगा। देन कमिंग टू बॉडी लैंग्वेज, देन हिज जॉ मूवमेंट, एंड देन द वे सडन पॉज वो ले लेता है बात करते करते, एंड देन इंटिमिडेशन दिखाना था किसी तरह से, और ये सब चीजें एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली होने लग पड़ी। देन वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ मॉक शूट, हम लोगों के भी हुए हैं, मेरे वरुण के हुए हैं, मेरे हर्ष सर के हुए हैं, एंड बाकी सब कैरेक्टर्स के भी हुए हैं। ये था कि सेट से पहले ये मेरी पर्सनल चॉइस रहती है कि मैं मेंटली सॉर्टेड होके जाना चाहता हूँ सेट पे। मेरे पास जितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे regarding my character or story, I will ask in the workshop. I don't want to go and ask in front of 10 people कि अरे ये ऐसा क्यों नहीं है। उस चीज का जवाब वहां पे मिल गया, सॉर्टेड। अब वो मैं रिपीट नहीं करूंगा चीज। अगर मुझे एक चीज के लिए मना कर दिया है कि तुम ये चीज इस एक्शन को इस तरह से नहीं करोगे, तो ओके डन, वहां पे मैंने अपना क्रॉस लगा दिया, उस गली में मैं जाऊंगा नहीं। सो कहीं ना कहीं वो प्रेप करके अनदेखी पे गए। एंड अगेन आई थिंक सभी लोग इस चीज से सहमत होंगे, कोई भी कैरेक्टर आप नया पकड़ते हो, आपको हर्ष सर और मेरी तो बात भी हुई है सीजन 1 के शूट के टाइम पे कि कोई भी आप कैरेक्टर करते हो, वो चीज आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आपने क्रैक कर दिया। इट टेक्स टाइम। आप शूट पे भी चले जाते हो, आपको 3 से 4 दिन लगते हैं। आप बाकी को एक्टर्स के साथ उस रियल लोकेशन पे शूट करते हो, देन यू गेट अ फील कि अच्छा ये इस तरह से मोल्ड हो सकता है, इस तरह से इस डायरेक्शन में जा सकता है। वो सब चीजें होगी। एंड सीजन 2 में तो वी नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिंकू, इट्स जस्ट द थोड़ा इमोशनल साइड यू विल सी, एंड आई होप पीपल विल लाइक इट। Okay. So, Indian societies mein men are usually, told that you have to be strong and, West type, and that is actually Rinku. So, I want to understand that, aapke saath mein bhi aisa tha, like, was that your upbringing? Like, you were told that you have to be strong, which is why, it was sort of easier to get into this kind of character, ki kaisa tha aapke saath mein? What was the situation like? I think strong तो सभी को रहना चाहिए, क्योंकि the world is क्या बोलूं मैं, हाश हो जाता है कई बार आपके ऊपर। तो स्ट्रांग तो सभी को ही होना चाहिए। ये जरूर है कि मेरी जो पेरेंटिंग हुई है उसमें मुझे हमेशा बुक्स बंद करके यही बोला गया है कि बाहर जाके खेलो, बाहर की दुनिया से ज्यादा जो सीखोगे वो कहीं नहीं सीख पाओगे। तो बुक्स में वही सब चीजें हैं, बाकी बुक्स तो तुम स्कूल में भी पढ़ रहे हो, वो वहीं पे पढ़ो, और यहाँ घर आओगे तो थोड़ा अपना देखो, एक्सप्लोर करो। And yes, my dad, and plus I'm a boarding school. I did my boarding school from Chandigarh, so I'm a product of a hostel. And वहाँ पे again एक different culture था। जब मैं starting में गया तो मैं रोया भी, लोगों ने रैप भी किया, ये सब भी किया, but then within 4-5 days I was like कि this is not the right way. या तो इनको वापस वैसे ही मजा चखाया जाए, या फिर सहते रहो। तो फिर मैंने दूसरा वाला तरीका ले लिया कि इनको मजा चखाया। So then, yeah, you learn a lot, you experience a lot in life, and then you use somewhere in your character. Yeah. Right. So Okay. strong तो सभी को होना चाहिए। Yeah, but एक balance होना चाहिए, नहीं? Yeah. नहीं, so I'm not saying कि रिंकू मतलब strong ही दिखेगा, कहीं ना कहीं उसके भी लूप होल्स हैं लाइफ के, और वो भी दिखेंगे एज द स्टोरी प्रोग्रेस। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से दिख ही जाएगा। बाकी रिंकू हर एक चीज के लिए परफेक्ट, हर एक चीज में परफेक्ट तो नहीं हो सकता। दो ही रिस्पेक्ट्स हिज फादर, लव्स हिज फादर, वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ फैमिली, प्लस हिज लव लाइफ, ही इज वेरी सॉर्टेड। वो सामने मुंह पे कुछ भी बोल देता है, और उसके बाद शादी भी उसी से करेगा। एक बारी में बात कर ली, पापा जी के सामने भी ले गया। तो काफी सॉर्टेड सा इंसान है और वेरी ऑनेस्ट। रिंकू इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। उसमें वो नहीं है, वो माइंड गेम्स नहीं खेलता है, ही इज ऑल फ्रॉम हियर। उसका मन आ गया
तो बात खत्म, मन नहीं आया तो फिर उठा लो। Okay. So with the second season, do we see Rinku getting darker या थोड़ा और soften हो जाएगा वो? There are events जो कि उसकी लाइफ में हो रहे हैं, as you must have seen trailer, तो उसमें आप देखोगे कि उसकी रिंग सेरेमनी हो रही है, and there are other events which I'm not going to talk about right now, but वो सारे events कहीं ना कहीं रिंकू को एक ऐसी सिचुएशन पे डालेंगे जहाँ पे आपको रिंकू दिखेगा एक टफ सिचुएशन से फाइट करता हो कि कैसे ओवरकम करेगा। तो या Right.